की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। टिप चाहिए, पैसा लगाना है तो सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम पे लगाओ। डूबेगा नहीं, जलेगा भी नहीं, कोई खा नहीं जाएगा और मिनिमम 30 साल का रिटर्न देगा। अब इससे बेटर इन्वेस्टमेंट है तो बताओ। सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम, रहो बेफिक्र। It's festival time and it's time to dress up. It's time to gear up for the celebrations. It's time to celebrate with Manyavar. Congress insider slams own party. मैंने महसूस किया है कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं राम से भी नफरत है। Reality check for Congress on Lord Ram. Congress against Lord Ram, debating tonight at 9 p.m. It's festival time and it's time to dress up. It's time to gear up for the celebrations. It's time to celebrate with Manyavar. Israel is all prepared for the big war, the Hamas terrorists. The rockets being fired, of course, at Kibbutz Be'eri only. बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी हमास के आतंकी फायर कर रहे हैं। Get down again, it's a missile. कम से कम दर्जन भर रॉकेट्स की आवाज आई है जो हिजबुल्लाह ने दागे हैं। We have been hearing continuously an explosion. तकरीबन 50 से 70 BMP जो हैं वो फॉरवर्ड एरियाज पर हैं। The people here were staying, but there was a rocket that was fired. एशकुलॉन की तरफ भी टैंक्स जा रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर है। From the Delhi studios of Republic TV, it's time for Arnab Goswami on the debate. Arnab Goswami on the debate at 9. Presented by Amity University. Powered by RP Sanjeev Goenka Group. Century Ply, Club Prime, PolicyBazaar.com and Sera. Good evening and welcome, ladies and gentlemen. On the debate tonight, I will have with me a very, very senior Congress leader with an expose. This very, very senior Congress leader has been the Congress party's Lok Sabha face in 2 general elections, and he's coming live tonight with a big revelation on Republic. He says that he has proof that the Congress has many leaders who are promoted within the party, I don't know why, who are essentially anti-Hindu. Remember, this is a Congress party top-level insider. He says that in the Congress leadership are many leaders who are not just anti-Hindutva, but anti-Hindu. He says
They don't just hate the Ram temple coming up in Ayodhya. He says that they hate Lord Ram himself. Now, these are major, major revelations, viewers. They reflect what we suspected, that the Congress party under Sonia Gandhi has unfortunately taken a totally anti-Hindu turn, that the party is anti-Hindu, that the party therefore wants to break up the Hindu vote using caste because its leadership is against Hinduism. And while the Congress party does that, at the same time, their strategy is to break Hinduism and consolidate the Muslim vote by having secret meetings, like another top leader recently revealed in a secret tape that we had shown on Republic, these secret meetings between the Congress leadership in mosques across Karnataka. Now, viewers, the expose tonight is very important because it is less than 6 months to the general elections. And this is the time to make a choice. Yes, it is time to choose. Can India have a party whose leadership is anti-Hindu? In a country where over 80% of the population is Hindu, is it even conceivable to have an anti-Hindu, anti-Hinduism party in the Congress party? Ladies and gentlemen, a choice we must make in the run-up to the general elections. Let's debate. This is a top Vadra aide, top Vadra Gandhi aide, top-level Congress leader making a big revelation tonight that the Congress party essentially is anti-Hindu, and this is something that we are playing out. Ladies and gentlemen, there's something going wrong about Nitish Kumar, the way he's talking and behaving. It's not normal. The way he attacked and went personal against another former Chief Minister, Jitan Manjhi, on the floor of the Assembly. What exactly is wrong with Nitish? Debating that at 10 p.m. tonight. And at 10:30, the Supreme Court has pulled up the Delhi government on the air emergency, AAP versus BJP at 10:30 p.m. And here are the headlines this Friday evening on the debate tonight. मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत, हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है. Congress insider, top Vadra Gandhi aide, makes a revelation. He says many leaders promoted in the Congress are anti-Hindu and anti-Lord Ram. The BJP points out at the Congress party's anti-Hindu history, calls the party allergic to Lord Ram. अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठ जाओ. हम इसको बना दिए. ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना. Is there something wrong with Nitish Kumar? After the dirty sex talk, he mocks and insults and goes extremely personal with the former Chief Minister Jitan Manjhi in unspeakable language on the floor of the House. एकदम जिसको हम कहते हैं एरोगेसी मतलब कि घमंडपना, उनमें घमंडपना की स्थिति आ गई है. वो अपने आगे किसी को नहीं समझते हैं. वो सोचते हैं कि जो हम सोचते हैं, हम करते हैं, वही बड़ा बात है. Manjhi fights back, alleges a deliberate conspiracy by Nitish's allies to dethrone the Chief Minister. As pollution rises to alarming levels, the Supreme Court pulls up the AAP government in Delhi. An IT department seizes close to 10 crore rupees in hard cash in Jaipur. Sources say the cash was brought in to be used in the election campaign. Ladies and gentlemen,
In 2007, the UPA, the Congress party, told the Supreme Court that Lord Ram never existed. The Congress party said, and this was under Sonia Gandhi's guidance, that there is no proof that Lord Ram ever existed. They went on record and we were all shocked. Now, the decidedly anti-Hindu turn seems to be a policy decision of the Congress party. Congress leaders have coined words like Hindu terror, aimed at linking terrorism with Hinduism. They have created the word Hindu Taliban, aimed at linking the terrorist philosophy of the Taliban to that of Hinduism. And tonight, a very senior Congress leader who has been the party's face in several Lok Sabha elections has said that many leaders promoted in the Congress party hate Lord Ram. They don't just hate Hindutva, they hate Hinduism. They despise the word Hindu. This is not my claim, this is a claim of a very, very senior top Congress leader. Viewers, Lord Ram is worshipped by 1.1 billion people in India. Has Acharya Pramod Krishnan exposed what many wanted to hide about what's going on in the Congress party? An anti-Hindu turn. Let's debate. In 2 days, Ayodhya will witness spectacular Diwali celebrations with 21 million lamps being lit on Sarayu Ghat. It will be the biggest celebration in Ayodhya just 2 months ahead of grand Ram Mandir inauguration. A mandir that has been in the making for decades. As we inch closer to the temple, a Congress insider has made an explosive statement with respect to party stand on Ram Mandir and Lord Ram. राजनीति में भाषा होती है वो सांकेतिक होती है. मेरी किसी से निजी दुश्मनी थोड़ी है और मैं किसी के विषय में निजी बात थोड़ी करूंगा. मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं राम से भी नफरत है. हिंदुत्व से नहीं हिंदू शब्द से नफरत है. हिंदू धर्मगुरुओं को अपमान करना चाहते हैं. Acharya Pramod Krishnan's statements have not come as a surprise for the BJP. Rather, they are calling it a confirmation of what they already knew. और ये पहली बार नहीं हुआ है. याद करिए एक एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट 2014 में, जिसमें साफ साफ बाकायदा लिखित रिपोर्ट में ये ऑब्जर्वेशन था कि हिंदू विरोधी नजर आ रहे थे, इसलिए चुनाव हार गए. और उसके बाद इनके कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष हिंदू शब्द को गंदा बोल चुके हैं. यानी ये बहुत साफ है कि कांग्रेस के अंदर हिंदू धर्म और भगवान राम के प्रति अवमानना और हिंदू धर्म के प्रति घृणा और हिंदू धर्म के समूल नाश के लिए कृत संकल्पित है. The Congress that told the Supreme Court in 2007 that there is no historical proof of Lord Ram. The same Congress whose leaders were against Ram Mandir construction. On the Ram Janmabhoomi, as a Hindu, obviously I'm very conscious that a vast majority of my fellow Hindus believe that was the specific birthplace of Ram. And for that reason, most good Hindus would want to see a Ram temple at the site where Ram was supposed to be born. But I also believe that no good Hindu would have wanted to see that temple built by demolishing somebody else's place of worship. Ayodhya, what happened to the Babri Masjid? The jurisprudential basis of that judgment is extremely narrow. It's a very thin ledge. It's not a right judgment which both sides have accepted. Because both sides have accepted it, it has become a right judgment. We have a problem with unemployment, inflation, education, health. No one talks about these things. But everyone talks about Ram, Hanuman, Mandir. And I have said that temples are not going to create jobs. Now want a pie of Hindutva votes. राम मंदिर ये हमारे देश के हर व्यक्ति का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा प्रतीक है और मुझे बड़ी खुशी है कि राम मंदिर अंत में बन रहा है. ये नई स्कीम है जिसमें गौमूत्र से दवाएं बनती है. हमने तय किया कि हम भी छत्तीसगढ़ की तरह आवारा पशु नहीं घूमे, इसलिए हमने गोधन योजना भी शुरू करी है.
With historical anti-Hindu and anti-Lord Ram comments, can Congress now vie for Hindu votes? Let's debate. And today, viewers, on my program, I have with me Acharya Pramod Krishnan. He's right there in the screen right below me. He's a very senior Congress leader, has been their Lok Sabha candidate, and he's the person making the revelations today. Also with us, आज हमारे साथ है Chief Priest of Ram Janmabhoomi Temple, Acharya Satyendra Das, National Spokesperson of the BJP, Sanju Verma, Sadhvi Jayabharti, Vineet Goenka, Nikhil Jain, and Lokesh Jindal of the Congress Party. And I will begin with a few questions to Acharya Pramod Krishnan. Acharya ji, आपने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में कई नेता हैं जो एंटी हिंदू हैं, वो नफरत करते हैं हिंदू शब्द से। राम मंदिर को ही नहीं नफरत करते, वो भगवान श्री राम से नफरत करते हैं। कौन है ये नेता? और अगर उनकी ऐसी राय है, ऐसा पोजीशन है उनका, तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी है, इसके टॉप लीडरशिप में इनको कैसे पोजीशन मिल रहा है? मुझे तो मतलब जब मैंने आपकी बात को आज मैं सुन रहा था, आपके साउंड बाइट को, मैंने सोचा कि ऐसे नेताओं को जगह कैसे मिल रही है और कौन है ये नेता, देश को जानना बहुत जरूरी है। ये कौन है नेता और ये क्या करते हैं जिस कारणवश आप कह रहे हैं कि ये हिंदू विरोधी हैं? आचार्य जी जरा बताएंगे हमको। देखिए अर्नब गोस्वामी जी, ये बात मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। जो A.K. एंटोनी ने अपनी रिपोर्ट में कही थी वो भी यही था। जब 2014 में बहुत कांग्रेस पार्टी बुरी तरह चुनाव हारी, तो चुनाव क्यों हारी उसकी एक कमेटी बनी जिसकी अध्यक्षता A.K. एंटोनी साहब को दी गई। एंड A.K. एंटोनी हिंदू नहीं है, वो तो क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं। उन्होंने ये बात कही थी कि देश के अंदर एक मैसेज ये गया है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी हो गई है, जिसकी वजह से हम बुरी तरह हारे हैं। इसको हमको समझना पड़ेगा। तो A.K. एंटोनी साहब ने जो बात कही वो उन्होंने कही कि देश में एक ऐसा परसेप्शन बन रहा है, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, मेरी और एंटोनी साहब की बात में बस ज़रा सा बारीक सा फ़र्क है। वो ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी के भीतर रह करके मैं कांग्रेस पार्टी के आज भी साथ हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगा, मैंने महसूस किया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ हिंदू विरोधी लोगों का जमावाड़ा होता जा रहा है और ऐसे लोगों का जमावाड़ा हो रहा है जिन्हें आप इनको हिंदू विरोधी क्यों कहते हैं? आचार्य जी क्षमा कीजिएगा, आपसे दोबारा पूछ रहा हूं। जब आप कह रहे हैं कि हिंदू विरोधी नेताओं का जमावड़ा हो रहा है, जिसका मैं ट्रांसलेट कर दूं, दैट देयर इज एन इंक्रीजिंग कांग्रेगेशन ऑफ एंटी हिंदू लीडर्स विद इन द कांग्रेस पार्टी, तो आप इनको एंटी हिंदू क्यों कहते हैं? ये ऐसी क्या चीज कहते हैं, करते हैं, या किस कारणवश आप इन लोगों को एंटी हिंदू कहें? ये एंटी हिंदू क्यों है? ये कैसी सोच है? अगर आप नाम ले सके बताइए कौन है। ओके। और दूसरी बात, ये क्या करते हैं जिसको आपको लगता है, जिससे आपको लगता है कि वो एंटी हिंदू है? अर्नब, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो कहती है और जो मानती है कि महात्मा गांधी के रास्ते पे हम चलते हैं। महात्मा गांधी की हर सभा का जो शुभारंभ होता था वो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इससे होता था। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसकी हर सभा, जो जनसभाएं होती थी, उनमें वंदे मातरम का नारा गूंजता था और भारत माता की जय के नारे गूंजते थे। और मुझे लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी आज इस मोड़ पे आ गई है, उसके अंदर कुछ ऐसे लोग इकट्ठा हो गए हैं जो बहुत पावरफुल हैं, और वो लोग जो हैं उन्हें
जैसे भगवान श्री राम के मंदिर का जब ताला खुलवाने की बात आई तो राजीव गांधी ने 1985 में खुलवाया, लेकिन सवाल इस बात का है कि 1985 में राजीव गांधी जी के द्वारा जब ताला खुलवाया गया उसके बाद से लेके कोई कांग्रेस का नेता रामलला के दर्शन करने इसलिए नहीं गया क्योंकि ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी मानी गई है। लेकिन जब 9 नवंबर 2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि ये राम जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि है और यहाँ मंदिर बनेगा, और राम जन्मभूमि के निर्माण के मंदिर के निर्माण के लिए एक न्यास का गठन हुआ, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, बड़ी विडंबना है, एंड दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर आवर पार्टी, दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर दिस कंट्री, दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर डेमोक्रेसी, दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर दिस कंट्री कि 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया, जब फैसला आया तो सब ने इसको स्वीकार किया, उसके बाद तो कोई झगड़ा नहीं रह गया। लेकिन 2019 9 नवंबर के बाद से लेकर आज तक कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता, और मैं कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता जब कह रहा हूँ इसमें इंडिया अलायंस का भी कोई भी बड़ा नेता, कोई भी बड़ा नेता रामलला के दर्शन करने आज तक नहीं गया। तो इसका मतलब क्या है? नंबर 1। नंबर 2, मैंने महसूस किया है क्या ऐसा तो नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है प्रमोद आचार्य जी। आचार्य जी वैसे तो मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ, एक मिनट आचार्य जी, वैसे मैं बहुत सिंपल आदमी हूँ, मैं सब चीज़ों पे विश्वास कर लेता हूँ, मगर मुझे थोड़ा शक हो रहा है, मुझे ये शक हो रहा है संजू वर्मा जी कि आचार्य जी इज अ ट्रोजन हॉर्स, जिसको कहते हैं, आप ट्रोजन हॉर्स हैं, आप प्रियंका वाड्रा के बहुत करीब हैं। आप ये बोलना आपने शुरू कर दिया है कि आज तक कोई, एक मिनट, कि आज तक कोई कांग्रेस का नेता या नेत्री रामलला वहाँ पे नहीं गई हैं या गए हैं, और आपके इसके कहने के शीघ्र बाद शायद प्रियंका वाड्रा वहाँ पहुँच जाएंगी, और आप वैसे भी चाहते हैं कि प्रियंका वाड्रा प्रधानमंत्री की कैंडिडेट बने, तो मे बी आप जो अंग्रेजी में कहते हैं सेटिंग द ग्राउंड कर रहे हैं, आप दिखाना चाहते हैं कि प्रियंका वाड्रा प्रो हिंदू है, सोनिया गांधी की तरह एंटी हिंदू नहीं है, इसलिए आप ये बात कह रहे हैं ताकि एक तरह से मोमेंटम बने, और उसके बाद आपकी जो राजनीतिक सोच है आपकी ये होगी कि इसके बाद जल्दी से आप प्रियंका वाड्रा को कहेंगे देखिए मैंने ऐसी बात कह दी, अभी आप जाके प्रूव कर दीजिए कि आप प्रो हिंदू हैं, क्योंकि आप एक पॉलिटिशियन भी हैं, आप आचार्य हैं, धर्मगुरु हैं, मगर आप पॉलिटिशियन नेता भी हैं। आपको लग रहा है यही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि प्रियंका वाड्रा को प्रो हिंदू पोजीशन करा दो, नहीं तो सोनिया गांधी जैसी एंटी हिंदू पोजीशन रह जाएगी। क्या ये आपका षड्यंत्र है आचार्य प्रमोद कृष्णन जी? अगर ऐसा षड्यंत्र है तो आप खुलकर कह दे कि हाँ अर्नब मैं ऐसा षड्यंत्र कर रहा हूँ, आचार्य जी कह दे, कोई हिचक ना हो, आचार्य जी खुलकर कह दीजिए। अरे मैं कह रहा हूँ कुछ लाफेबल है तो वो बोलेंगे ना, आप क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? आचार्य जी बोलेंगे ना, आप लाफ कीजिए, यू लाफ, आपको रोक रहा हूँ, आप हंसिए। आचार्य जी बताइए। शर्मा's comedy nights। आचार्य जी ऐसे में डिबेट नहीं कर पाऊंगा, ऐसे में नहीं कर पाऊंगा। I will quit this show। अगर आचार्य जी बोल रहे हैं, आचार्य जी बोलिए। I will quit this show। No, you don't quit, you continue, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, मुझसे करिए, मैं 1 to 1 पूछ रहा हूँ, मैंने सवाल आपको पूछा, आप मेरे सवाल का जवाब दे। आप मुझसे सीधा सवाल, आप रुक जाइए, वॉल्यूम डाउन कीजिए दूसरों का। अब मैं आपके हर सवाल का जवाब, आर यू सेटिंग द ग्राउंड फॉर प्रियंका वाड्रा? मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, आपके हर कड़वे सवाल का जवाब दूंगा, और मैं किसी सवाल से बचना नहीं चाहता। जहां तक आपने ये बात कही कि ये कोई पॉलिटिकल एक फील्डिंग की जा रही है, तो हो सकता है कि आप इसको समझ रहे हों और आप इसको समझें, आप अपने तरीके से समझें। हमारे यहाँ रामचरितमानस में कहा गया, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यहाँ संदेह किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ, संदेह में तो समझ गया ना, ये संकेत संकेत से बात कर रहे हैं आप। देखिए आप मुझे बोलिए, क्या आपने प्रियंका वाड्रा को कहा है कि जल्द अयोध्या जाइए, रामलला के दर्शन कीजिए? क्या आपने कहा है कि नहीं कहा है? क्या मैं सही समझ रहा हूँ कि गलत समझ रहा हूँ? बताइए कि राहुल गांधी पहुंच जाए, सोनिया गांधी पहुंच जाए, क्योंकि आजकल पूरे देश में प्रो हिंदू सेंटिमेंट है, उसके पहले आप पहुंच जाइए। मगर मुझे बताइए कि आपने ये कहा है कि नहीं कहा है? दूसरी बात, अगर ये बात है तो पहले कांग्रेस पार्टी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भगवान श्री राम कभी थे ही नहीं,
उस पोजीशन को चेंज किए बिना रामलला के दर्शन कैसे किए जा सकते हैं? पहले माफी मांगे, मैं कह रहा हूं पहले माफी मांगे कांग्रेस पार्टी कि उन्होंने एक इस देश में, भारत जैसे सनातन भूमि में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि रामलला, राम भगवान श्री राम तो कभी थे ही नहीं। अभी उस पोजीशन को बिना चेंज किए हुए आज, क्योंकि आपके लिए राजनीतिक तौर से बहुत अपॉर्चुनिस्टिक बात हो जाती है कि अभी तो पूरे देश में राम मंदिर का माहौल बन रहा है, उसके पहले जल्दी जल्दी रामलला के दर्शन कर दीजिए। मैं पूछ रहा हूं, आचार्य सत्येंद्र दास जी भी इधर है, अगर कांग्रेस पार्टी के किसी नेता बिना इस बात के लिए माफी मांगे हुए कि उन्होंने कहा, उनकी हिम्मत हुई कि भारत में कहा कि भगवान श्री राम कभी थे ही नहीं, इसके लिए माफी मांगे बिना कोई रामलला के दर्शन कर सकता है क्या? जिनको मानते ही ना हो आचार्य जी, पहले प्रियंका वाड्रा कहे कि मेरी माता श्री सोनिया गांधी ने गलत किया जो सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भगवान श्री राम कभी थे ही नहीं। पहले तो मेरा जवाब नहीं सुना और मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। पहले ये बात कहे ना, आपको मेरा साथ देना चाहिए और आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तो सच के साथ हूं। बात को पूरा होने दो, उसके बाद आप दूरदर्शी है, मैं भी बहुत कुछ देख पाता हूं। अर्नब जी बोलिए। अर्नब, मेरी बात को समझने की ना कोशिश आप कर रहे हैं और बजाय इसके कि आप मेरा सपोर्ट करें मुझ पे हमला कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति है जो इंडिया गठबंधन में है, वो कहता है मैं सनातन धर्म को समाप्त कर दूंगा, वो मिनिस्टर है, उसका फादर चीफ मिनिस्टर है स्टालिन, और कांग्रेस पार्टी चुप रहती है। तो जो व्यक्ति सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करता है और हम उसके साथ खड़े रहें तो इसका मतलब है कि हम हिंदू विरोधी हो गए। तो मैं तो चुप नहीं रह सकता हूं। दूसरी बात, बिहार के एक मिनिस्टर हैं जो रामचरितमानस के खिलाफ बोलते हैं। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो रामचरितमानस के पन्ने फाड़ने की बात करते हैं। जो राम का द्रोही है, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही, जो राम का नहीं हो सकता है वो भारत का नहीं हो सकता है। और भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है सनातन के बिना, और राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है, ना भारत के लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है। अर्नब, सनातन और राम भारत के कल्पना में बसा है। तो अगर जो व्यक्ति सनातन धर्म का विरोध करता है, जो व्यक्ति राम का द्रोही है, जो व्यक्ति सत्येंद्र दास जो राम का दर्शन करने नहीं जा सकता है, आचार्य सत्येंद्र दास, ऐसे लोगों का जमावाड़ा अगर पार्टी में हो गया है, तो अगर मैंने ये बात कह दी कि कांग्रेस के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो राम नाम से चिढ़ते हैं, तो कौन सा गुनाह कर दिया? आपने अच्छी बात कही। आप कौन है वो लोग? और मैं जो कह रहा हूं ऑन-एयर कह रहा हूं, सारी दुनिया के सामने कह रहा हूं। आप मुझ पे इल्जाम लगा सकते हो, लेकिन आपको मुझ पे इल्जाम लगाने का हक नहीं है। पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। लगा क्या प्रियंका वाड्रा उनमें से नहीं है आचार्य जी? क्या प्रियंका वाड्रा उनमें से नहीं है? I am not like that person. I am not like that person. You know each and everything about me. जब स्टालिन ने कहा, जब स्टालिन ने कहा कि you know very well about me. सनातन धर्म I am not like that person. प्रियंका वाड्रा पिछले 2 महीनों से चुप क्यों थी? I am not opportunist person. You know each and everything about me. You know each and everything about me. But where? I'm not like that person. मैं जो कहता हूँ आचार्य जी, I know कहता हूँ, आपके शो में कह रहा हूँ। आचार्य जी, I know, मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं। आचार्य जी मेरी बात सुनिए। मेरा ऐसा हो गया है ना, इतनी एक्सपीरियंस हो गई है जीवन में, मैं किसी चीज को ना फेस वैल्यू पे नहीं लेता। मुझे लगता है कोई ना कोई षड्यंत्र है, कोई पॉलिटिकल प्लानिंग है, और मुझे दुख होता है आचार्य सत्येंद्र दास जी कि आजकल भगवान श्री राम के नाम पर भी राजनीति हो रही। मेरा सीधा सवाल आचार्य सत्येंद्र दास जी पे है, क्या कांग्रेस पार्टी के आचार्य प्रमोद कृष्ण जो बात कह रहे हैं, इस पर आपको क्या लगता है? वो क्यों कह रहे हैं? देखिए हमारे भगवान राम का स्वभाव इस प्रकार से है कि कोट विप्रवद लागई जाहू, आए सरल तजऊ नहीं ताहू। यदि समर्पण भगवान प्रति रामलला के प्रति ऐसा है उस कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, तो वह हमारे प्रभु इस प्रकार से दयालु हैं कि उन पर दया करके और उनके जितने भी अपराध हैं क्षमा कर देंगे। लेकिन इतने अपराध हैं, कोई भी मैं देखा हूँ कि जब चल रहा था राम जन्मभूमि का केस, तो इतना विरोध किए हैं कि किसी प्रकार से उसको क्षमा योग्य है ही नहीं है, केवल समर्पण है। यदि समर्पण इस प्रकार से करते हैं तो संभव है कि उनके ऊपर भगवान रामलला की कृपा हो और वो क्षमा कर दें। लेकिन इतना मैं शुरू से देखा हूँ, जितने भी जब इसकी तारीख पड़ती थी
कि किसी प्रकार से इसका समाधान हो, तब कांग्रेस पार्टी ने उसको बराबर विरोध करती चली आई है और इतना विरोध किया है कि कहीं जब ये सभी लोग को पता है, पार्टी को पता है, सभी लोग को पता है, तो इस प्रकार से जो उनका विरोध हुआ है, राम के प्रति हुआ है और राम मंदिर के प्रति हुआ है, वह वस्तुतः क्षमा योग्य नहीं है। क्योंकि यदि क्षमा योग्य होता तो इस प्रकार से ऐसी बात नहीं करते। हाँ, अब एक प्रथा चल गई है कि आप क्षमा मांग ले और इस प्रकार से कह दे तो हो जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि भगवान के प्रति अपराध करने वाला व्यक्ति अब भगवान ही क्षमा कर सकते हैं, किसी मानव के प्रति क्षमा करने की बात नहीं है। इसलिए जो कृति कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है वो वस्तुतः क्षमा योग्य नहीं है। मुझे तो लगता है इसमें दो ही बातें हो सकती है आचार्य जी। जो अगर आज जो आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा, जो देश का नंबर 1 हेडलाइन है संजू, इसके दो ही तात्पर्य हो सकते हैं। There can only be two meanings which can be driven out of it. One is that he is a trial balloon for Priyanka Vadra, who he supports. He wants Priyanka to go running to Ayodhya and prove that she is the last remaining pro-Hindu person within the Congress party, because he sees the political opportunity there, since her mother has been seen to be profoundly anti-Hindu. The other meaning which can be derived is he's suffocated and is going to quit the Congress party and maybe join the BJP. Now, having said that, इन्होंने आज एक बड़ी बात कही संजू वर्मा जी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी, और महात्मा गांधी अपने हर सभा को शुरू करते थे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। मेरा सवाल ये होगा संजू, क्या आज कांग्रेस पार्टी संभव है, क्या कोई सभा भगवान श्री राम का नाम लेकर वो अपने सभा को शुरू करे? क्योंकि फिर कहा जाएगा ओहो यू आर कम्युनल, यू आर हिंदुत्वा, यू आर एंटी मुस्लिम, ये बातें कही जाएंगी। क्या आज संभव है कि कोई कांग्रेस पार्टी की सभा भगवान श्री राम के नाम को लेकर शुरू हो? ऐसे मत कीजिए, संजू वर्मा जवाब देंगी उसके बाद। संजू। थैंक यू। अर्नब जी, पहले तो आपके दर्शकों को धनतेरस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड ऑन अ लाइटर नोट आई वांट टू से, अर्नब आप सिंपल तो नहीं हो, यू आर एज सिंपल एज द पाइथागोरस थ्योरम, बट हैविंग सेड दैट, on a more on a more serious note, I just have this to say. आचार्य प्रमोद कृष्णन जी के साथ मैंने कई डिबेट्स में हिस्सा लिया है और कई बार हमारी बहुत गर्मा गर्म बहस भी हुई है, जहां पर we have been on the opposite sides of the spectrum. बट कुछ महीनों से मैं ये देख रही हूं कि जब कांग्रेस पार्टी के कुछ सो कॉल्ड सेक्युलर सूरमा, चाहे वो भगवान श्री राम हो या फिर हिंदुइज्म और हिंदू भक्तों और राम भक्तों की श्रद्धा पर लोगों ने सवाल खड़े किए हों, तो आचार्य प्रमोद कृष्णन ने तब बिना डर के और बिना अंजाम के बारे में सोचकर उन्होंने अपनी बुलंद आवाज से अपने बयान में एक सार्थकता के साथ बात कही है और उसका मैं रिस्पेक्ट करती हूं, मैं आदर करती हूं। Now coming to the moot topic about whether Acharya Pramod Krishnan is a Trojan horse who's batting for Priyanka Vadra, तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी that the Congress is a confused house, and I will say this on the basis of what we've seen in the last 72 hours. इनके कुछ नेता है कमलनाथ जो अभी भगवान श्री राम की दुहाई देते हैं, तो वहां दिग्विजय सिंह को समझ नहीं आ रहा कि मैं मध्य प्रदेश के चुनाव में अपना जो वजूद है वो पूरे इक्वेशन में लाने के लिए मैं क्या कमलनाथ का समर्थन करूं या समर्थन ना करूं। राहुल गांधी एक तरफ कहते हैं कि मैं दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण के गोत्र से बिलोंग करता हूं, दूसरी तरफ ये वही राहुल गांधी हैं जो कहते हैं मंदिरों में तो सिर्फ बलात्कार होते हैं। शशि थरूर जो इनके एक दिग्गज इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं, वो कहते हैं 2019 के चुनाव से पहले शशि थरूर का ये बयान पब्लिक डोमेन पर है, इफ द बीजेपी कम्स बैक टू पावर अगेन वी विल सी द राइज ऑफ हिंदू तालिबान। जो सुशील कुमार शिंदे हैं, who was earlier the Home Minister of India and a senior Congress leader, he has also spoken about how the 26/11 Mumbai terror attack was हिंदुओं की और RSS की साजिश। So and saffron terror, who can forget that the whole concept of saffron terror
was given a new dimension altogether by the likes of P. Chidambaram, by the likes of Sushil Kumar Shinde, and a whole host of Congress leaders who today have zero relevance. And सबसे बड़ी बात ये, आज तो कपिल सिब्बल राज्यसभा की टिकट के लालच में कांग्रेस छोड़कर he joined समाजवादी पार्टी. But there is a tweet of Kapil Sibal which never goes out of fashion, and though he has deleted it, it keeps cropping up on my timeline, where he has said, यदि राम जन्मभूमि बन गया, मंदिर बन गया, तो मैं आत्मदाह कर लूंगा. I would rather kill myself than see the construction of Ram Janmabhoomi Mandir during my lifetime. ये कपिल सिब्बल, आधे कांग्रेस और आधे समाजवादी पार्टी, ये तो इनका हालचाल है. And last but not the least, I will end my comments by just saying one thing. I've been on a zillion debates with you, Arnab. Udayanidhi Stalin, who is a close ally of Rahul Gandhi, says Sanatan Dharma is akin to dengue, malaria, leprosy, COVID, blah, blah, blah. और प्रियंक खड़गे, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे, who is the Congress president, उनके बेटे हैं. And प्रियंक खड़गे कहते हैं, so what if Udayanidhi Stalin made those deplorable remarks? There's nothing wrong. Sanatan Dharma is indeed akin to COVID, dengue, malaria, what have you. And then he brazenly says, oh, we were talking about a casteless society. No. We were not condemning Hinduism. ये है इनकी hypocrisy और चापलूसी का जीता जागता अवतार, और पब्लिक है, सब जानती है. ये पब्लिक को आप मूर्ख मत बनाओ, बेवकूफ मत बनाओ. ये पब्लिक आपके मैं अपनी ओर से एक बात कहूंगा. निखिल ये पूछते थे, अभी साउंड बाइट भी देखा था कि will more temples create more jobs, will more Hindu temples create more employment, do we need temples or hospitals? तो मैं ये सवाल पूछता हूँ, साध्वी जया भारती और निखिल मेरे सवाल को ध्यान से सुनिए. यही कांग्रेस नेता क्या कहेंगे कभी? Will more mosques lead to more jobs? Will more mosques remove unemployment? Do we need mosques or hospitals? ये क्या बात है? नहीं, ये क्या बात है? ये क्या लाइन है? ये कौन सी सेक्युलर लाइन है? ये कौन सी स्यूडो सेक्युलर थिंकिंग है? सिर्फ हिंदू टेम्पल्स को, अरे कोई जब मंदिर बना के कोई कह रहा है कि अस्पताल मत बनाओ. नहीं, निखिल जवाब दीजिए, ये मानसिकता क्या है? Do we need temples or jobs? Why? Have you ever asked, do we need mosques or jobs? This is a mindset. Can I at least now respond? Arnab, please. Mindset. I'm a voter. I want my party to respect my faith. What's your problem? If I'm giving my political party an agenda, and if my political party is carrying out, you had no gumption to carry it out. Don't speak rubbish. Arnab, what is it? No political party. Your political party can carry an agenda to stand against Lord Ram. Then BJP can carry an agenda to be for Ram. Be clear with that. Congress party carried an anti-Ram, anti-Hindu agenda throughout my memory. Get outside WhatsApp. Thank you, Arnab. I'm leaving. आचार्य जी रुक जाइए. आचार्य जी रुक जाइए. आचार्य जी रुक जाइए. आचार्य जी जाइए मत. आचार्य जी रुक जाइए. आचार्य जी को एक और सवाल. आचार्य जी को एक और सवाल. आचार्य प्रमोद कृष्णन को एक और सवाल. एक और सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णन. नहीं, आचार्य प्रमोद कृष्णन. आचार्य प्रमोद कृष्णन, आपने जो सोनिया गांधी को एंटी हिंदू कहा, आपने जो एक मिनट आचार्य प्रमोद कृष्णन, आपने जो सोनिया गांधी जी को एंटी हिंदू कहा, और आपके शब्द थे कि राम से नफरत करने वाला हिंदू नहीं हो सकता. राम मंदिर को रोकने की प्रयास किसने की सबको पता है. इस रहस्य पर कोई पर्दा बाकी नहीं है. तो हम सबको पता है कि आपका इशारा तो सोनिया गांधी को था, क्योंकि सोनिया गांधी के समय में ही वो एफिडेविट दी गई. मैं क्या करूं, मैं शीघ्र कई दिनों में रिपब्लिक भारत में फिर से एंकरिंग करूंगा. मेरी बात सुनिए आचार्य जी, राम मंदिर को रोकने की प्रयास कितने की? न कापिए मत. सुनिए, ये रहस्य आप ही खोल दें, क्योंकि सोनिया गांधी जो थी, क्या आप कह सकते हैं सोनिया गांधी नहीं थी? क्या सोनिया गांधी ने वो एफिडेविट नहीं सबमिट करवाई? अरे कपिल सिब्बल तो मोहरा थे. मोहरे के पीछे किसकी हाथ थी, किसकी चाल थी?
क्या ये सोनिया गांधी की चाल नहीं थी कि एफिडेविट कर दो सुप्रीम कोर्ट की भगवान श्री राम थे ही नहीं? क्या सोनिया गांधी की चाल नहीं थी कि कपिल सिब्बल ने वहां पे एफिडेविट फाइल की कि भैया आप 2019 के चुनाव के पहले कभी भी राम मंदिर इशू को सुप्रीम कोर्ट में सेटल ना कर दे? सोनिया गांधी के नाम लेने से आप डरते क्यों है? इतना कुछ कह दिया है तो क्या डरते क्यों है? नाम लेने से डरते क्यों आचार्य प्रमोद कृष्णन जी? नाम लीजिए, खुलकर कहिए, पूरी बात कहिए। ये संकेत में बात करना ठीक नहीं है। संकेत किसके तरफ है मुझे पता है। This is getting very Hindi centric and Hindi अर्णब गोस्वामी जी, अर्णब गोस्वामी जी, एक तो मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ संजू वर्मा जी का कि उन्होंने मेरी भावनाओं का सम्मान भी किया और उस भावनाओं को समझने की कोशिश की। आप मेरी भावनाओं को ना समझने की कोशिश कर रहे हैं और ना मेरी भावनाओं को शायद समझ पाएंगे। आप जो कहना चाहते हैं वो आप कहिए, मुझे उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर, इंडिया गठबंधन के अंदर सोनिया गांधी हैं जिन्हें हिंदू नाम से नफरत, सोनिया गांधी के एंटी विरोध हिंदू हैं, आज तक करने नहीं गए हैं। क्या सोनिया गांधी एंटी हिंदू हैं? जो राम लला के दर्शन करना नहीं चाहते हैं, जो भगवान राम के प्रति समर्पित नहीं है, जो भगवान राम का नाम लेके राजनीति करना चाहते हैं, भगवान राम के नाम के धोखा देना चाहते हैं, मैं उनका समर्थन नहीं करता हूं। मैं आज भी कह रहा हूं, जो राम का नहीं है, जो सनातन का नहीं है, वो भारत का नहीं हो सकता है। और इस पर मैं आपसे खुली डिबेट करने को तैयार हूं, लेकिन मैं आज इस डिबेट मगर जो अब तक नहीं हुए, चुनाव के पहले होने की कोशिश करेंगे तो उन चुनावी हिंदुओं पर हम विश्वास क्यों करें? जो अब तक नहीं हो पाए भगवान श्री राम के, तो वो चुनावी हिंदुओं का हम विश्वास क्यों करें? बताइए, पूछता है भारत। बताइए आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, आप मेरे प्रोग्राम से जा नहीं सकते, सवाल तो आपका पीछा करते रहेंगे। भारत को पूछने का हक है। अर्णब गोस्वामी जी, मैं पूछ रहा है भारत, आचार्य जी पूछ रहा हूं आपसे, आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं। मैंने अर्णब गोस्वामी सोनिया गांधी क्या एंटी हिंदू नहीं है? बताइए मुझे। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर, पर जो चुप मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को सुनिए। आपको जो कहना कहिए, जो समझना समझिए। मैं जो कह रहा हूं वो स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर, इंडिया गठबंधन के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें हिंदू शब्द से चिढ़ है, जो राम के नाम से नफरत करते हैं, नेता जो आज तक राम लला के दर्शन करने नहीं गए हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। कांग्रेस नेत्री थी, सोनिया गांधी कांग्रेस की टॉप लीडर थी। जब वो एफिडेविट फाइल हुई, इसका 2018 की एफिडेविट, 2019 की एफिडेविट, 2014 की एफिडेविट, सोनिया गांधी वहां पे आप किस पे हमला करना चाहते हैं, किस पे हमला नहीं करना चाहते हैं, ये आपका दायित्व है, ये आपका कर्तव्य है, ये आपका फर्ज बनता है। मैंने जो कहना था कह दिया, और मैंने जो कहना था कह दिया। मुझे जो कहना होगा मैं कहूंगा। का नाम लेना चाहिए कि नहीं आचार्य जी को? ना मैं आपसे घबरा रहा हूं, ना मैं आपके सवालों से घबरा रहा हूं। नहीं, आप लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वो कांग्रेस पार्टी है जो महात्मा गांधी की कांग्रेस है। संजू जी कुछ कह रहे, एक्सपोज हो जाए, नाम सबके अपने सामने, राजा राम, नाम सबके सामने। और मैं क्या कहूं? मुझे अच्छा लग रहा है। भाई, क्या सोनिया गांधी कोई प्रोग्राम रघुपति राघव राजा राम हृदय से नाम लेकर कर सकती हैं? सबको रखिए ना स्क्रीन पर। क्या भारतीय जनता पार्टी में नहीं हूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता का सम्मान करते हुए उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। लेकिन अफसोस है अर्णब गोस्वामी कि आप मेरी भावनाओं को नहीं समझे। आपने मुझ पर इल्जाम लगाए, आपने मुझ पर निशाने साधे, आपने मुझे टारगेट किया। मुझे इसका कष्ट रहेगा। एक पवित्र भावनाओं से कोई व्यक्ति अगर आपके शो में आता है तो उसका सम्मान करिएगा, और मैं आपका बहुत बड़ा सम्मान करता हूं। मैं आपको राष्ट्रभक्त पत्रकार मानता हूं। आपके और हमारी पार्टी के बीच में कितने मतभेद रहे, लेकिन मैंने हमेशा आपका सम्मान किया। लेकिन आज अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आपने मेरी पवित्र भावनाओं के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया है, संदेह किया है। मैं तो सिर्फ राजनीतिक स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश कर रहा हूं। मान्यवर, आज आपके पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश कर रहा हूं। देयर इज नो पॉलिटिकल स्टडीज। राजनीति में होने का मतलब ये नहीं होता कि हर वक्त झूठ बोला जाए। राजनीति में होने का मतलब अर्णब गोस्वामी ये नहीं होता है। राजनीति में होने का मतलब ये कतई नहीं है कि हर वक्त झूठ बोला जाए। राजनीति में होने का मतलब ये नहीं है कि हम इंसानियत खो दें। राजनीति में होने का मतलब ये नहीं है कि हम भगवान राम और सनातन धर्म पर समझौता कर लें। राजनीति में होने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि हम सनातन धर्म पर समझौता करेंगे। हम अपने राष्ट्र पर समझौता करें। भारत माता के नाम पर कोई समझौता नहीं हो सकता। वंदे मातरम पर कोई समझौता नहीं हो सकता है।
राजनीति छोटी है, राष्ट्र बड़ा है। सनातन बड़ा है। मैं सनातन के साथ हूँ, मैं राष्ट्र के साथ हूँ, मैं राम के साथ हूँ, मैं राम की श्री चरणों में सब राजनीतिक सत्ता को ठोकर पे मार सकता हूँ। I need to come in for a debate. और I just want to ask one thing. You know, आज कई लोग हैं कांग्रेस के नेता और दिग्गज नेता जो ये कहते हैं, why is the BJP trying to appropriate the राम मंदिर legacy? राम मंदिर जो अभी बनेगा और जनवरी 22, 2024 को उसका भव्य उद्घाटन भी होगा नरेंद्र मोदी जी के हाथों द्वारा। तो कांग्रेस के पेट में इतना उबाल आ चुका है, इतने पेट में दर्द हो रहा है। They are asking the BJP, why are we trying to appropriate a national legacy? So I have just one question. It was way back in 1976. Indira Gandhi was the Prime Minister and a committee formed under the aegis of B.B. Lal and the famous archaeologist K.K. Mohammed. They came out with a finding saying that on the western side of the Babri Masjid Mosque, under that on the western side are the remains of a Hindu temple. Indira Gandhi ne kya kiya? That report was consigned to the dustbin. From 1976 till 2019, we had to wait for more than 4 decades. It was on the 9th of November 2019 that by virtue of a majority Supreme Court judgment under the aegis of Justice Ranjan Gogoi, that, you know, a diktat was given that yes, this land belongs to Ram Lalla और यहाँ मंदिर बनेगा। और हमने कहा था मंदिर वही ये बात है ना, that is the point, that is the point. हमने कहा था मंदिर वही बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे और हमने करके ये रेस में है संजू ये रेस में, संजू कांग्रेस पार्टी रेस में है, कांग्रेस पार्टी इज इन द रेस। विनीत गोयनका आप कैसे देखते हैं? आप आचार्य प्रमोद कृष्ण को क्या कहना चाहेंगे इसमें? वो कह रहे हैं मैं उनके पवित्र भावनाओं को, his pure intentions I cannot understand. Would you like to say something to him? Not that my intentions are impure, yeah. Yeah, Ram मेरे भी intentions pure है, journalistically pure. Ram to you and Ram to everybody on the show and all the audience who are watching me right now. What do you expect from Sonia Gandhi, the daughter-in-law of Firoz Bhai and daughter of an Italian Christian, and also Acharya Pramod ji? Both of them, till now, were calling Ram as to be mythology. They gave name to Hindu as Hindu terror, and moreover, they tried to create that the disputed land is a masjid. See, even after the Supreme Court has announced that the disputed land is a Ram Mandir, they yet call it as to be a masjid. That's a shameful thing. We have seen that in the era of UPA, under the leadership of Sonia ji, churches has amassed wealth and also land. And Acharya Pramod Krishnan ji was well behind the family and standing with them till date. Naturally, his behavior is under scanner. I cannot believe that after 9 years and 8 months, he has this visualization that he should come and speak on behalf of Iran. आचार्य जी, झूठी सही सच्ची सही, अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो भूली भटके में आना अच्छा ही है, लेकिन ये बात तो संदेह तो जरूर होगा कि 9 साल 8 महीने बाद आज क्यों आपको जागृति हुई, आज क्यों आपको दर्शन हुए, इसके बारे में जरा बताएं। और एक लाइन में आपको बोलना चाहूंगा, जो ना हुआ हमारे राम का वो नहीं हमारे कोई काम का। आचार्य जी बोध करें और बताएं कि 9 साल तक आप कहाँ थे, क्यों थे, चुप क्यों थे? हाँ, चुप क्यों थे? हाँ आचार्य जी। नहीं, मैं बिल्कुल कभी भी चुप नहीं था। इसका जवाब संजू वर्मा दे चुकी हैं, जो भाजपा की प्रवक्ता हैं वो दे चुकी हैं। और सच सच होता है। राजनीति में रहने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा झूठ बोला जाए। आचार्य जी, आपने झूठ नहीं, जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे एक सेकंड लिसन। मुझे लगता है सुनिए give me a moment. I would hear. मुझे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मुझे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैं ये भी नहीं चाहता आप मुझे इनाम दें। मैं ये भी नहीं चाहता कि आप मुझे कोई तमगा दें। मैं ये भी नहीं चाहता। मैं ये भी नहीं आपको रोकूंगा कि आप अपने टारगेट को अचीव करने में कोई कसर छोड़ें। आप अपने अपने गेम करिएगा। मैंने स्वच्छ हृदय से, निर्मल मन से, और भगवान श्री राम ने कहा निर्मल मन जन सो मगर मैं देखिए छिद्र न भावा। अर्णब गोस्वामी जी, आपको तो मेरा साथ देना चाहिए। अर्णब गोस्वामी, आपको मेरा साथ देना चाहिए। मैं आपके साथ हूं, मगर मैं आपके साथ देना चाहिए। जो राम के विरोधी हैं, आपके साथ हूं। अरे आचार्य जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपके साथ हूं, नहीं मानते। मेरी बात सुनिए। आचार्य सत्येंद्र जैन जी है। देखिए आचार्य सत्येंद्र जैन जी हैं,
मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, मैं आचार्य सत्येंद्र जी से उनके थ्रू एक बात कहलवाना चाहता हूं आपको। देखिए आचार्य जी, आचार्य सत्येंद्र दास जी, आप बहुत ही वरिष्ठ आचार्य है, धर्मगुरु हैं। आचार्य सत्येंद्र दास जी हमारे पूजनीय है, वंदनीय है, प्रातः स्मरणीय है। आचार्य सत्येंद्र दास जी हमारे भी पूजनीय है भाई, आपके थोड़ी हम तो हमारे भी पूजनीय है, वो सुन रहे जपने वाले लोग। नहीं अरे आचार्य सत्येंद्र दास नहीं, आचार्य सत्येंद्र दास जी, आचार्य सत्येंद्र दास जी मेरे ऊपर संदेह कर ही नहीं सकते हैं, ना मेरी निष्ठा पे कर सकते हैं, ना श्रद्धा पे कर सकते हैं। आप पर संदेह नहीं कर रहे। आचार्य सत्येंद्र दास जी अगर ये कह दें कि आचार्य प्रमोद कृष्ण की निष्ठा में, श्रद्धा में, आस्था में कमी है, पूछना आचार्य प्रमोद तो मैं जल समाधि ले लूंगा। नहीं, एक मिनट आचार्य, विनीत रुक जा, विनीत, दिस इज द मोमेंट, 1 मिनट, विनीत वेट। आचार्य सत्येंद्र जयंती आप पर संदेह नहीं कर रहे। मैं आचार्य जी को चरण स्पर्श करते हुए एक सवाल पूछना चाहता हूं। आचार्य सत्येंद्र दास जी, मुझे यह बताइए, जब किसी व्यक्ति को एहसास हो जाता है जीवन में, जब किसी को ये मतलब इस चीज की प्राप्ति हो जाती है कि ये पार्टी जिसमें मैं हूं वो हिंदू विरोधी है, तब क्या घुट घुट कर जीने का कोई मतलब होता है? आचार्य प्रमोद कृष्णन जी कहते हैं मेरी पार्टी जो है सनातन के खिलाफ है, और क्योंकि मैं धर्म गुरु हूं, मैं सनातनी हूं, मेरे खिलाफ है, तो क्या उनको घुट घुट कर उसी एंटी हिंदू पार्टी में रहने का कोई मतलब है? आचार्य सत्येंद्र दास जी, आप आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण जी को अच्छी प्रकार से जानता हूँ। उनकी भावनाएं जो हैं, भावना से, भाव बस भगवान, उनकी भावना बहुत ही पवित्र है और अपनी भावना से ही वो बोलते हैं, और इसलिए इतने पवित्र भावना होने के कारण से जो बनावटी बातें हैं वो से कोई मतलब नहीं है। लेकिन यह निश्चित है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जी जो भी बोलते हैं और जो कहे हैं कि जो राम का नहीं वो किसी का नहीं, जो सनातन धर्म का नहीं वो किसी का नहीं, और जो इस प्रकार से राम का विरोधी है, उन्होंने यही भी कहा है कि हमारी पार्टियों, इतना कहना कम नहीं है, साहस की बात है कि हमारी पार्टियों में कुछ लोग ऐसे हैं जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, हिंदू के विरोधी हैं, राम के विरोधी हैं, राम मंदिर के विरोधी हैं। ये सारी बातें कह चुके हैं। उनकी भावनाएं बहुत ही उज्जवल और स्वच्छ है। इसलिए मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण जी के सम्मान करता हूं, और उन्होंने जो कहा है, जिस पार्टी में रह करके और पार्टी के ऐसे लोगों के प्रति उन्होंने कहा है कि जो वस्तुतः विरोधी हैं, तो विरोधी जो लोग हैं उनको बताए, यह कहना साहस की बात है। और जो उन्होंने व्यक्त किया है, उनकी भावना इस प्रकार से है जो भगवान राम के प्रति समर्पित है। 10 seconds. साध्वी जया भारती फर्स्ट, देन क्लोजिंग करता हूं आचार्य सत्येंद्र दास जी का। और मैं अर्णब गोस्वामी 10 सेकंड मुझे दीजिएगा, 10 सेकंड। मैंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें राम से चिढ़ है, जो राम के नाम से चिढ़ते हैं, जिन्हें राम मंदिर की बात छोड़िए, भगवान राम से चिढ़ते हैं, हिंदू धर्म से चिढ़ते हैं। लेकिन जिस दिन मुझे ये लगेगा कि पूरी कांग्रेस पार्टी ही राम विरोधी है, उस दिन मैं इस पार्टी को छोड़ दूंगा। धन्यवाद। राम राम। ये क्वालिफाइड स्टेटमेंट इसको कहते हैं। नहीं, रुकिए एक मिनट, साध्वी जया भारती। Yeah, Arnab, I would say that yes, I would like to second Sanju Verma here that, we've seen in our memory that wherever it has been an issue related to the Hindu or Sanatan Dharma, then Acharya Pramod Krishnan has come out independently and he's voiced what his feelings and his concerns are. That's his on record. But however, it will be very interesting that once he is in the party and he is saying why he's still in the party, and he's saying, when he's saying that, there are some leaders who are anti-Hindu and factions inside the India Alliance, which are, so it will be very interesting to see how it unfolds and how when you, how would you very interesting. be Okay, there Sanju, within the same 10 party. seconds. Overtime, Sanju. Okay, 10 seconds में I will just say, मोदी है तो मुमकिन है, thanks to नरेंद्र मोदी। आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वड्रा ये मजबूर हो गए हैं जो मंदिरों के घाट घाट का पानी पीने के लिए मजबूर हो गए हैं। हम कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम भगवा भी पहनेंगे, प्लेकार्ड नीचे रखिए, टीका भी लगाएंगे, प्लेकार्ड नीचे रखिए, भी पहनेंगे और रुद्राक्ष भी पहनेंगे और गर्व से पहनेंगे।
Either let me speak, Arnab, or at least let me show my sign of protest and dissent. 52 minutes into the debate, you have not let any opposition person speak for half a minute even. The entire debate has been against the Congress. So much of it has been lies. What is this? I don't understand. Now I can't hear your audio. All the time. These are senior religious figures. These are senior religious figures. Even I've spoken less. Nikhil, next time I'll get you to speak more. But thank you for the placard. झूठ कोई नहीं बोल रहा. आपके साथ disagree कर रहे हैं. I thank you, ladies and gentlemen. Very interesting turn of events. And when I come back on the other side on this very special Diwali weekend, pre-Diwali weekend show. On the other side tonight, what exactly is going wrong with Nitish Kumar? Something is wrong. Something is wrong. The way he's attacking, abusing, doing sex talk, using filthy language. What's wrong? And its impact on the India alliance in a few minutes. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. Presented by Amity University, ranked amongst the top 3 universities globally. Powered by RP Sanjeev Goenka Group, growing legacies since 1820. Century Ply Club Prime, Raho Befikar. PolicyBazaar.com, Har family hogi insured. In association with Star Health Insurance. QS&THE, the world's foremost university rankings organizations, have ranked Amity amongst the top 3% universities globally, making it among the very few Indian universities to be included in both rankings. Yet another top ranking for Amity University. जब भरोसे की हो बैकिंग तो निवेश का हर फैसला बन जाता है बुलंद. इसीलिए हम खड़े हैं हर निवेश के लिए, हर निवेशक के साथ. SBI Securities. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Sarah, this is your space. Play it your way. RP Sanjeev Goenka Group, growing legacies over 200 years. Hey Alexa, start the robo. Introducing Forbes Robo Vacuum Cleaner. Daily cleaning as easy as 1, 2, 3. It dry vacuums, even wet mops, and recharges automatically. Get the Forbes Robo Vacuum Cleaner from Eureka Forbes. I want to soar above the skies and fulfill my responsibilities. With LIC. Paid your LIC premium? On time. Dil ki suno. LIC chuno. LIC, हर पल आपके साथ. Sarah, this is your space. Play it your way. RP Sanjeev Goenka Group, growing legacies over 200 years. टिप चाहिए, पैसा लगाना है तो सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम पे लगाओ. डूबेगा नहीं, चलेगा भी नहीं, कोई खा नहीं जाएगा और मिनिमम 30 साल का रिटर्न देगा. अब इससे बेटर इन्वेस्टमेंट है तो बताओ. सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम, रहो बेफिक्र. Motorola, India's best 5G smartphone brand. अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम अरे चुनो नहीं यार, कुछ जानते हो, बैठ जाओ. हम इसको बढ़ा दिए. ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना. Presented by QS&THE, the world's foremost university rankings organizations, have ranked Amity amongst the top 3% universities globally, making it among the very few Indian universities to be included in both rankings.
Yet another top ranking for Amity University. इंश्योरेंस कोई आरओआई नहीं है। एमएफ ईयर चेक कर, हाई होगा। क्या है? आप बीपी चेक कीजिए, हाई होगा। हाई बीपी से सीकेडी हो सकता है और उसके ट्रीटमेंट से आपका टोटल लाइफ सेविंग्स खत्म। एसएचआई ले लो। एसएचआई स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। अपनी सेविंग्स को बचाइए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। द हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट। Hi, what's that? That's a Manish Malhotra. Not your dress. The cupboard. The laminate is a Manish Malhotra design. Century Laminates by Manish Malhotra. Fashion for your furniture. Live it up, live it up. RP Sanjeev Goenka Group, growing legacies over 200 years. लेकिन हमने तो एकदम सॉलिड टीएमटी बार लगाया है। मतलब रुंगटा स्टील टीएमटी बार, जंग से न माने हार और मजबूती बेशुमार। रुंगटा स्टील टीएमटी बार है बिल्कुल रेडी। Eat it on time and please ride the bike slowly. Okay. And this is for your safety. Arey, I almost forgot. LIC. This is for our safety. दिल की सुनो। LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। Sarah, this is your space. Play it your way. RP Sanjeev Goenka Group, growing legacies over 200 years. टिप चाहिए? पैसा लगाना है? तो सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम पे लगाओ। डूबेगा नहीं, जलेगा भी नहीं, कोई खा नहीं जाएगा और मिनिमम 30 साल का रिटर्न देगा। अब इससे बेटर इन्वेस्टमेंट है? तो बताओ। सेंचुरी प्लाई क्लब प्राइम, रहो बेफिक्र। From the Delhi studios of Republic TV, it's time for Arnab Goswami on the debate. Arnab Goswami on the debate at 10. Presented by Berger Easy Clean. Powered by Reva University, Quick Heal Secrite, Green Lamb Laminates, PolicyBazaar.com and Cucina. Co-powered by Mankind Pharma and Nexon EV. Welcome back, ladies and gentlemen, to the debate. There is something very strange, at the very least, going on. For Nitish Kumar, who has long seen himself, as per sources very close to him, as a prime ministerial aspirant of India, of lobbying overtime, some say, to cobble together the India Alliance, and being a centerpiece in hosting India Alliance meetings, stitching up the India Alliance, there seems to be an odd series of behavior from Nitish Kumar. After doing the dirty sex talk in the assembly, he's now gotten up in the same assembly and gone on a tangent against the man he made chief minister. But if you see this latest video of Nitish Kumar, and many old Nitish Kumar videos are also coming out, people are analyzing them and seeing his strange behavior. In many occasions, you see he just goes off on a tangent. Many speeches, sometimes even when the President of India is on the stage, he goes off on a tangent, people don't know where to look, what to say, just goes on a tangent. This has been happening more and more of late. Ladies and gentlemen, this is not just an abusive attack by Nitish Kumar against an ex-chief minister. It is not a stray outburst at all.
that we are seeing here in this video. It is not a stray outburst that we are seeing in this video. It is a very well thought out statement in the assembly. If you see the video, in this latest Nitish video, Nitish goes on and on and on and on and on abusing the ex-chief minister, who has made a very dignified comment. The speaker, if you see, has moved on, and Nitish keeps rambling and rambling and rambling and rambling, and then hysterically getting more and more angry against Manjhi for no reason. This is very strange behavior. Forget any prime ministerial aspirant. Would any seasoned, mature politician be speaking like this? His physical gesticulations, the way he's talking of late, let alone someone with the experience of Nitish Kumar, and I'm not sure what political benefit Nitish Kumar is getting by behaving like this of late. I just don't see it. And it is quite troublingly for the Mamata Banerjees and Rahul Gandhis and Lalus who have poured their faith into Nitish Kumar as the central figure of the India Alliance. So where does all of this leave this India Alliance, which is yet to meet since a long, long time, and the main face of the India Alliance is behaving like this of late? Viewers, this video after video, disaster after disaster, the complete silence from the India Alliance lobby at the way in which Nitish is going on, and his antics are putting the already slipping India Alliance on an even more slippery slope. The point is this, viewers, we are 5 to 6 months away from the general elections. What kind of leadership do we want? I ask you, is this the leadership that the country will have? Is Nitish Kumar the kind of leadership that the country deserves, ladies and gentlemen? Nitish does it again. Let's debate. अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। आई हम लोगों के साथ था, तब भी जाके उल्टा पुल्टा बोलता था। Bihar Chief Minister and India Alliance PM face hopeful Nitish Kumar has done it again. This time his target was his ex-aide and ally who is currently with the NDA, Jitan Manjhi. इसलिए महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि रहे हमको बात नहीं समझ में आ रहा है। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको। ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। भाग के चलाया था साथ पार्टी में। अध्यक्ष महोदय, अभी हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए? इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है। सब समर्थन कर रहे हैं, प्रभारी नहीं। सुन लीजिए, बता रहे हैं, ये बहुत गलत सारे लोग समर्थन कर रहे हैं। और कोई सेंस है? ये जो प्रचारित करता है, सुनो ना, बैठो ना यार, बैठो ना। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत, बात बोल रहे हैं। अरे भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम, अरे चुनो नहीं यार, कुछ जानते हो, बैठ जाओ। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। Watch how he ridiculed Manjhi on the floor of the house. आप चाहता है गवर्नर बनना। हम लोगों के साथ था, तब भी जाके उल्टा पुल्टा बोलता था। तो लगा दीजिए गवर्नर इसको। अरे बनना चाहता है ये, इसको गवर्नर बनवा दीजिए। इसको, अरे आप कहाँ नहीं बनाते हैं गवर्नर? इसको गवर्नर बनवा दीजिए। ये गवर्नर बनाने के चक्कर में ही वो चक्कर में लगाता है। इसके जान लीजिए, परिवार का लोग इसके खिलाफ है। अरे सुनो, इसके परिवार का लोग इसके खिलाफ है। आप जान लीजिए, ये कोई काम का आदमी नहीं है। एक नारा लगवा रहे हो, उसको मुख्यमंत्री कौन बनाया? आप बनाए हो? भूल गए कौन बनाया उसको? मेरी गधापनी इसको बना दिए।
आप बोल रहे पूर्व मुख्यमंत्री, अरे मेरा ही बनाया हुआ है, हम जान करके चाहते हैं कि एक्सपोज्ड हो जाओ, इन लोगों के साथ रहो, एक्सपोज्ड हो जाओ. A statement demeaning a former chief minister and Dalit leader comes just 2 days after he made objectionable comments against women in the house. अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़कियां के साथ रतवा में सुतवे न करता है, तो रतवा में सुतता है तो उसी में रहता है पनिया भी, पर इसमें भी. अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो. Anger against Nitish continues to mount. BJP has called it an insult to Dalits. While giving it back to Nitish, Manjhi has raised some questions. जो इनका लक्षण और बातचीत और कार्रवाई हो रही है उसे लगता है कि नॉर्मल आदमी इस प्रकार से नहीं करेगा. कहीं न कहीं अब नॉर्मलिटी है, इसका जांच होना चाहिए. कोई मामूली पद पर नहीं है, चीफ मिनिस्टर पद पर है, इसीलिए हम एक हाई लेवल की कमेटी जांच करे इनकी मानसिक स्थिति क्या है. With back-to-back blunders, is it time for Nitish to introspect and step down? Let's debate. And viewers, Bansuri Swaraj is spokesperson of the BJP. Karan Verma, Gyanendra Mishra supports the Congress party. Gyanendra ji, we are getting very concerned. Can you hear me? We are getting very concerned at the behavior of Nitish Kumar. It is a matter of great concern, the way he has been talking, especially because he is one of the prime ministerial faces of the India alliance. Is this the leadership that India deserves? Gyanendra ji, can you hear me? I don't think he can hear me. I'll open this up with Karan. Karan, have you been observing his behavior? Something's not right. Yeah, Gyanendra ji, is this the behavior of a prime ministerial candidate? Since he is being positioned as a PM candidate of the India alliance, we are getting very concerned about his behavior. Is this the leadership that India deserves? No, I think, Arnab, to be honest with, we are reading too much into what he is saying. Obviously, in the first instance, when he talked about the population control, the choices of the word was in a very bad taste, and I think he realized it, and he unconditionally apologized for it, and he categorically taken the words that he has spoken back. I think with that, the controversy should have ended. Because what else you expect from a person who did a mistake? He was... No, but now he has 1 minute. Gyanendra ji, I don't know. Now the second video which has come. In this second video, there is a 5-minute rant and abuse against a former Chief Minister Jitan Manjhi that almost appears to be casteist in nature. It's an unhinged attack. Nitish does not appear to be in control of himself. His physical actions, his behavior, his choice of words, and his hysteria is a matter of concern. Are you not concerned? Karan, are you seeing that there's something wrong with his behavior of late? No. There are so many Nitish Kumar videos that are now being circulated. No, Arnab. Is there some problem? If I may, is there some problem? We have seen the hysteria of Mr. Biduri in the parliament. The way he went about abusing a sitting MP belonging to a particular caste, and in comparison to his diatribe against a particular community, if you compare it what Mr. Nitish Kumar speak in the assembly, personally I don't support this kind of in public discourse and the language.
So I for myself is very clear about it. But the way the political discourse in India is gone to the level, I think what he addresses in the assembly is nothing shocking in comparison to what is being said and done in the parliament of this country. Okay, I just want to take from Basuri. Basuri, I've watched this video. I don't know if you have. What I see is that Nitish is unable to control himself. He goes on and on. It's not a, it's, you know, people do take a jibes at each other, Basuri, but this is not a jibe. It's unhinged to the point of being 5.5 minutes of pure hysteria, Basuri. Something's not normal, something's not adding up. How do you view this politically and otherwise? Thank you, Arnab. Arnab, I don't see this as a blunder or as a gaffe. I actually see it emanating out of sheer arrogance of power. This is a man who's harboring prime ministerial ambitions. This is an individual who has been sort of flipping sides just to retain his CM chair. And he knows that the country is ready. Bharat is ready to elect Prime Minister Modi with a full majority government, with a thumping majority for the third time. Looks and like that is why already managed the voting machines. No, if you actually see, let her complete, Vivek. Can the left come in after some time? Let the BJP speak, then the left can come in. Okay. Oh, Arnab, it's to be expected. I didn't realize Vivek Bhai is part of the panel as well. Good evening, Vivek Bhai. This is going to be interesting. Now, I'll tell you one thing. As I said, this is emanating out of sheer arrogance of power. And I'll tell you, Gyanendra ji was talking about how this should not be part of public discourse. I'm sorry, this should not be part of private discourse as well. What he said today as well as the other day. Today, he humiliated a Dalit leader of this country. The other day, he actually reduced women to nothing but an object to satisfy carnal desire. He reduced the whole purpose of women education to nothing but population control. It's a personal relationship problem between Nitish Kumar of manners. and Mr. Manjhi. is a man who's a veteran of Indian politics. भाषा का संयम क्या होता है, मर्यादा का संयम क्या होता है, ये वो तो रमेश बिदूरी जी सिखाएंगे ना आपको। बात उन्होंने विधानसभा के वो भूल गए कि वो एक मुख्यमंत्री में, वो भूल गए कि उन्होंने लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हुए एक अक्षम्य पाप उस दिन करा जिस दिन उन्होंने नारियों की बेइज्जती करी, और एक दूसरा अक्षम्य पाप आज करा जब उन्होंने एक दलित लीडर की बेइज्जती। Being an emotional man. Arnab, I want to make a point, please. It was a personal Nitish Kumar is no spring chicken. Let Vivek complete. Let Vivek complete, Karan. Let Vivek complete one at a time. I have enough time here. I have 2 points for Basuri. I have 2 points. Vivek, you're responding to Basuri, all right. We'll have that. Yeah. Basuri, see, there are 2 points. Number one, please, audio. Both. If you don't like Basuri, loud words, if you don't like bad words, if you don't like aggression, I respect you for that. However, you need to condemn Mr. Ramesh Viduri also, and many from your own fraternity and party who have not set a very good, who have not been very good role models, although your party is in power at the center. Number two, this discourse that you're seeing of Nitish Kumar should not be seen as a casteist insult. It should be seen as a relationship problem between two big leaders. And it came out in a vent because Nitish Kumar is an emotional leader. He's an emotional man. So you need to see it in that. I mean, he's the man who's trying to raise the reservation from 50% to 75%. Why is he going to be anti-Dalit, anti-OBC or whatever like you're trying to say? So you need to see it in a different perspective. These are the 2 points I want to say. Now you counter. Now you tell me if I'm right or I'm wrong. And also tell me if you'll criticize Ramesh Viduri ji or not. Please, and then I respond to Vivek Bhai. Please. Okay, so Vivek Bhai, let me tell you one thing. How can I not see this as a casteist remark? How can I see this as not him humiliating a Dalit leader? What was the crux of what he said? He said that Mr. Manjhi was allegedly not meritorious at all. He said, "Tumhe CM meri murkhta ne banaya." That is arrogance of power. That you were made CM because of my stupidity. It is because I wanted you to become CM. I gave you allegedly a chance
as he allegedly put it, and he said, "ये तो तुम फिर हटे और हम तुमको हटाया. हमारी पार्टी के लोग कह रहे थे कि तुम गलत हो, तुम्हें हटा देना चाहिए था." He's talking about a former chief. This is not a fastest remark, personally. You said that he is humiliating Dalit then. But you can't use the word Dalit. No. There is a. I would, Vivek. Nitish Kumar, and he became a CM because of the stupidity of Basuri, a moment. Eroding all merit from Mr. Manjhi's caliber. Is that not humiliating? Yeah. So Basuri, I will. The aspect of Ramesh, there is already a show cause notice. If you're talking about a similar action to be taken against CM Mr. Nitish Kumar, I welcome your insinuations. You are trying to basically corner him because you feel he's so there are two aspects to this issue, Vivek, and let me come in. Let me come in, Vivek. Please, I can't speak over you. I won't attempt to. There are two aspects to this, and I lean with Masuri on this. You must see the video. Basically, Nitish Kumar is going on to say that in a way he is the king of Bihar, right? And it is his fault that he made a person with no standing, no background and no competence a chief minister, then in a very personal way attacks him by saying he has no sense, right? One of his party members, Karan, who's sitting beside him, tries to tell Nitish Kumar to calm down. But instead of calming down, he points his finger and he goes on to attack him. And then he continues his abrasive remarks. Every mentor has a right to do that. Abrasive remarks. And he has a brash attitude. No. 1 minute. In all these years, my question being, in all these years, this is... No, Karan, 1 minute. No, this is the... Why I'm asking, why has Nitish Kumar chosen a Dalit leader to be attacked like this? He has not attacked upper caste leaders like this. But he has chosen a Dalit leader, Karan. He has deliberately chosen a Dalit leader and deliberately insulted a Dalit leader because he's a Dalit leader. And Mr. Manjhi acted as an upstart. And Mr. Manjhi tried to backstab Mr. Nitish Kumar. That is how you need to see it. That is what Mr. Nitish Kumar Vivek, can I make a point, please? Now, I patiently heard you. Please. Karan. Yeah. It's not a Dalit. That's what you know, Arnab, what is worrisome for me, what is worrisome is that I have heard Nitish over the years. And he's no spring chicken. He's a veteran politician and experienced campaigner. So comparing him with others is not right. I have never seen him resort to this kind of tone. I'm really worried. I mean, either he's not in control of what he's speaking because he goes on and on. You're right. He was, the person next to him tried to calm him down, but he went on. Either he's too rattled or there is a pattern here. I mean, when you speak on the floor of the house, Arnab, you don't just speak extempore. You come prepared. The way he spoke about women. Vivek, please don't behave like this. Vivek, please keep quiet when the other person is speaking. The way he went on, talking about women, I mean, he just kept on. He didn't stop at any point. This shows a pattern. And I see a descent. No, I'm concerned. I see a complete descent into chaos. I'm concerned because this has never been. I am concerned because this is not the way he speaks. I am concerned because I am concerned because he's the biggest leader please, of the India Alliance. Let's understand this. He's considered a calming voice who can bring them don't know together. Imagine the one who is supposed to bring them together. There is a problem. He's falling apart himself. See, I tell you one thing. Karan, 1 minute. Karan, Gyanendra, a minute, please. Gyanendra, today, as we all know, is the 10th of November, Friday. 10th of November, 2023. 5 months from now, we would have begun the general election campaign. 5 months. You understand? 5 months is nothing. 5 months is 19-20 weeks. Okay. Now, in 19-20 weeks, we would have begun the general election process. What is the image of leadership today of the India Alliance? Nitish Kumar, who says women are the objects of sexual release. When a man wants to sexually release himself, he must choose to do it on a woman, and the woman must submit to being a subject of sexual release and be educated enough to protect herself from being pregnant.
No, there is no misunderstanding. There is no misunderstanding. I understand Hindi and English both well. Please, Vivek, don't spin it. Don't spin it, yeah. Don't spin it. You're spinning it, Vivek. Don't spin it. Don't be brazen about it, Vivek. Yeah. Don't be brazen about it. It's clear to all of us what he meant. And he must apologize. That whosoever felt bad, that was not my Apologize, intention. nonsense. He said I was misquoted. And according to a video doing the rounds on social media, I don't know if this is true. According to a video doing the rounds on social media, he goes to a minister's house to pay a tribute to his late father. Instead of showering the flowers on the father's picture, he showers them on the son who is alive. Now these are claims, I don't know. Then he goes on an unhinged attack on Manjhi. And then he says that women should be educated to protect themselves from being pregnant. Masuri, overall, I think it's time that the India Alliance declares its leader. Because if Nitish Kumar is the leader, we have a problem. I mean, people will have a problem. What do you say? I think they should declare a leader now. No, I think that would be left for India Alliance. Basuri. No, the leadership issue has become important now. Individual in the India Alliance is a leader in their own right and a dawedar for prime ministership. Now, Gyanendra Bhai keeps on raising the aspect of an apology. I must focus something here. Two aspects about his apology. First of all, it was a shoddy apology. I'm sorry to say this. Basuri, louder. It took him 12 hours to realize what he had said on the floor of the house. And when he came out and apologized, what were the words? Agar meri kisi baat se thes pahuncha. It took him 12 hours and then he realized that, oh, if it offended, did he not see all the women in MLAs in the house who were squeamish, humiliated and covering their faces in embarrassment? No. He never been able to make such of Indian politics. He needs to know that his words have some weight. Also, I feel he did not have. His apology, I'm sorry, it was nothing but a continuance of his apathy, of his arrogance of power, and it was a very, very shoddy apology. And I'm sorry, certain sins are inexcusable. And what he did that day, insulting Nari Shakti of this country, as well as today humiliating a former chief minister who happens to be a Dalit leader, both of them are inexcusable sins. Maximum for women empowerment in his state. 2005 when he came for the first time. 2006, Panchayati Raj got 50% reservation because of it. 2006, 50% reservation came into local body elections. And the United Nations has declared Bihar having the maximum women participation in this country. Either he is not mentally fit to be talking to know. Or so he's not this is deep-seated misogyny. Arnab, either this is his deep-seated misogyny or he is not in control of his faculties, plain and simple. There is no third spin to it. Vivek can go on spinning it. Truth is, he's done it again. Well, I think he needs to come out and explain what's going on. Ladies and gentlemen, here's my take on this. Here is my take on this, Karan. Can I give a quick 30-second take before I go to the break? My take on this, all of this, is that the events of the last couple of weeks, this week, have put into primary focus the issue of leadership in the India Alliance. Because the alliance has no coherence at the state level, we don't know if it will come together at the national level. But we are voters of this country. And you have a right to know who your leader is. If the India Alliance comes together and builds a Khichdi Sarkar like it was in the late 90s, and if it makes Nitish Kumar the Prime Minister of India, then we have a right to know in advance. You cannot deflect the leadership issue anymore. I would say the leadership issue has become the primary issue. No, that is the leadership issue, Basuri, Karan and Vivek, has become the critical issue. We can't be fooled anymore because we want to know. Absolutely. We have the right to know that. No, then you clarify, is it Nitish Kumar? Are you going to make him Prime Minister? You had I.K. Gujral. You had Mr. Devegowda in the past. Wow, we had I.K. Gujral. We don't want to go back. Yeah, and we know what happened during I.K. Gujral and Devegowda's time. We know exactly what happened. The country went for a toss at that time. We don't need Indian democracy did not declare the prime ministerial candidate beforehand.
We'll fight elections. We'll win. We'll defeat the BJP. Well, okay, viewers, that's his take. You know mine. Let's take a quick 30-second Securite commercial break and come back for a straight BJP-AAP face-off on the air emergency in the NCR. Ransomware and other advanced threats are on the rise. Your organization can be the next target. Are you ready? Securite Hawk Hunt XDR with AI-powered enhanced detection and response can help prepare your organization to counter next ransomware attack, data breach and advanced threat. Securite Hawk Hunt XDR. Now, the consolation, ladies and gentlemen, is that it rained quite a bit last night in Delhi and therefore the AQI went down. Things are a little better, but this we all know this is like a little bit of a quote-unquote, technically and literally I'm saying it, this is a breather. We don't know how long this one-day breather is going to last. We are breathing toxic air in Delhi. We are breathing toxic air in Noida. We are breathing toxic air in Ghaziabad. We are breathing toxic air in Faridabad. We are breathing toxic air in all areas around the NCR. It goes a little less as you move towards Greater Noida, but year after year is the same pollution menace. No solution so far, just a series of political mudslinging. And today the big story is that the Supreme Court pulled up the Delhi government to act fast. However, the problem is there is no sense of accountability. I have two questions. One, why is the centre not intervening more actively? Is it because it wants to expose both the Delhi and the Punjab governments, seeing that there is a chance of getting some political mileage out of this, because this ends up making the AAP look bad because it's in power both in Delhi as well as in Punjab? And secondly, why is the AAP doing nothing? Is this not part of their governance agenda? Does compromising the lives of dozens of millions of Indians not matter? Is it not politically important? Or is it not politically expedient? Or is it that the AAP does not think that people affected deep inside their lungs because they are smoking more cigarettes than they ever thought involuntarily, that their lives do not matter, that this is not a political issue? Ladies and gentlemen, I have a straight BJP versus AAP's face-off coming up. But here's the very latest on the air emergency, and then we'll debate. A thick layer of dark hazy smog for as far as the eye can see, triggering concerns over the safety of residents in Delhi NCR. पराली जल रही है पंजाब में और काफ़ी सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, बूढ़े लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि इस पोल्यूशन के बारे में AQI काफ़ी बढ़ गया है और सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं, सारे कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं. For about 2 weeks, the national capital has been breathing toxic levels of air quality. From the now discarded solution of odd-even formula to mulling artificial rainfall, the Kejriwal government completely failed to curb the pollution menace. आर्टिफिशियल रेन के लिए जो है हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने इसको लगाया है, क्योंकि अभी जो रात में बारिश हुई है उसका कितने दिन असर रहेगा अभी ये देखने वाला होगा. तो अगर इसका असर कम होता है तो फिर अगले चरण की हमें ज़रूरत पड़ेगी. Hitting out at the Aam Aadmi Party government, the BJP hit the streets in protest. Mr. Kejriwal himself said in 2018 that the main cause of pollution in Delhi, according to him, was Punjab's stubble burning. Today he has a government in Punjab. He was going to stop it in 1 year. What has been done? But the Aam Aadmi Party was busy preparing a national referendum for Kejriwal's work from jail order. आप देखेंगे कि दिल्ली को 9 साल से बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग. हर बार कोई ना कोई नाटक या ड्रामा लेकर आते हैं और मैं धन्यवाद करता हूँ कोर्ट का, इसको डेट वाइज और इसकी सीमा निश्चित कर कर बार बार इनसे जवाबदेही मांग रही है. वहाँ पर ये टिक नहीं पाते और सही बात है कि अब कोर्ट से एक बार डिसीजन आया था, उसके बाद में सोचते महीना निकल जाएगा, फिर अगली बार कुछ और नाटक कर देंगे. ये नाटक के अलावा कुछ नहीं कर रहे और मुझे लगता है कि दिल्ली को बर्बाद कर दिया और पंजाब को बर्बाद करने की तैयारी है. Even as the political face-off continued to rage on, the Supreme Court today set the record straight.
Interestingly, the Supreme Court called for stubble burning in Punjab to be stopped immediately. Yet another state ruled by Aam Aadmi Party. Then what was Kejriwal making hue and cry about 48 hours ago? Is it not time for our politicians to stop the politics and find a solution once and for all? Let's debate. In my last section, it's a straight BJP versus AAP debate. I'd like you to vote in on who you agree with. We just kept 2 speakers tonight. Now, you're in power. Akshay Marathe, AAP spokesperson, taking on Bansuri Swaraj, who stays on as BJP spokesperson. Akshay, this stubble burning thing was your promise. You said you'd stop stubble burning within a year. And you said to the people of Delhi that you would do it, and you told that to the people of Punjab. You are in power in Delhi and in Punjab. You have not been able to achieve anything, and you want to deflect the responsibility. At least admit your failure. At least begin by admitting your failure Arnab, before you tell us how you remedy the situation. Arnab, unfortunately, I just want to set the record straight, Arnab. Unfortunately, I have not been able to hear program audio right up to this point. So I was not able to follow all of the visuals that your channel was playing and what audio you played. But let me set on record what the court has said today, Arnab. But you heard my question. The Supreme Court has said that the problem. But you heard my question. I'd like to repeat my question. Would you like to begin by accepting your failure? That's my question. I will accept the failure to the extent that the failure is on the head of the Prime Minister of India as a leader of our country. Because the pollution problem is not a Punjab or Delhi problem. Mumbai has become a big source of pollution today. UP has a lot of cities that are on the top lists of polluted cities today. Bihar has a lot of cities that are on the top lists of pollution today. So to single out Arvind Kejriwal and Aam Aadmi Party without saying and admitting that Mr. Prime Minister Narendra Modi ji has not said a single word in the last 1 month when we have been discussing this every day on television channels. Don't you think that it is a responsibility of our leader, Mr. Narendra Modi ji, to come to the table, invite all the stakeholders, talk to them, figure out a problem, figure out a solution to this problem? Instead, we are saying Arvind Kejriwal is responsible, but how is Arvind Kejriwal responsible for the pollution in Bombay? How is Arvind Kejriwal responsible for the pollution in Bihar and Uttar Pradesh? Okay, is there no responsibility that we are willing to lay on the central government? Akshay, before I bring Basuri into the debate, because it's a face-off, let me say this. In today's day and age, and the other day I was speaking to a chief minister, and he told me, you know how much politics has changed. He's not our chief minister, by the way. He said politics has changed. Nowadays, if people feel, the voter feels we are not taking responsibility, we are not delivering, they will not just reject us. And I'm afraid that your attempt at refusing to take responsibility might end up giving that impression among people watching that the AAP is a party that avoids accountability. Having said that, before Basuri responds, I'd like to mention that 35 million tons of crops are set on fire in states like Punjab. That is almost 40% of Delhi NCR's pollution, and that is a decision that is in your hands. So kindly do not deflect because the numbers go against you. However, I'll get Basuri to respond. Basuri, what has the center done to intervene? Point? What has the... Can I respond on that specific point, Arnab, before you go to 40%. Basuri? Do you have a factual objection to what I said? Yes. Do you factually disagree with what I said? Yes. Am I wrong factually? Yes. And I'll tell you why. I'll tell you why. Arnab, last year, Aam Aadmi Party's government came to power in Punjab. Every year before that, for the last 7-8 years, we have seen as many as 50 to 60,000 farm fires across the state of Punjab. Within 1 year of Arvind Kejriwal's Aam Aadmi Party coming to power in Punjab, we have seen that number go to half of that in 1 year. Just imagine how easy it was for Aam Aadmi Party to turn around this figure in just 1 year. In the next 4 years that we still have, remember, we have been elected for 5 years. I'm sorry, volume up. I'm sorry, Akshay. I'm sorry, I'm intervening, and kindly listen to me now. Kindly listen to me now. Kindly listen to me now.
record-breaking number of crop burning fires this year, okay? 2003 crop burning incidents on 8th November itself. Sangrur 466, Bhatinda 221, Barnala 216, Faridkot 150, Mansa 131, Patiala 106, Firozpur near the border 103 and Ludhiana 96. It is happening in AAP-ruled Punjab. Now Basuri will respond. Basuri. Thank you, Arnab. Arnab, I'm first going to respond to your question and then I'm going to respond to what Akshay ji has said. You asked me what has the centre done. So let me place a few figures before you. Yesterday, there was a tweet by the Union Minister, Shri Bhupendra Yadav ji, who is the Union Minister for Environment and Climate Change. He has said that since 2018, the centre has given 1,426.41 crore rupees to the Punjab government for crop residue management machines. That's number one. On 30th of October 2023, there was a press release by the PIB that showed that the centre has allocated 3,333 crore rupees to Punjab, Haryana, Delhi and NCR states only to deal with parali or stubble management, stubble burning. I want to ask Akshay ji, what happened to all the guarantees which were given by Mukhyamantri Kejriwal ji? In November 2022, he said, we know we have all the data. In fact, Atishi ji, his minister, said in 2018, in 2020 as well. In 2020, there is a tweet by her saying, we have all the data which tells us that the major contributor to the pollution in Delhi is stubble burning. Then they do a U-turn. Atishi ji did a U-turn in October 2023 saying we have no official data. The Aam Aadmi Party government in Delhi is unable to form any policy on pollution because we don't even know the source of pollution. Coming back to what Kejriwal ji said, in November 22, he took a guarantee. He said, we know that it is stubble burning which causes pollution in Delhi. Once we are elected in Punjab, give us 1 year. And after that, it will be my responsibility, not the farmer's responsibility. Today, you have been in power in Delhi for the last 9 years. You have been in power in Punjab for over 1.5 years, mostly over a year. After her. Please tell me, what have you done? Even today, the Supreme Court asked the Punjab government about steps that they are taking as a long-term measure to slowly phase out paddy to restore the water table in Punjab and made it clear that it wanted farm fires to stop. Basuri, now, however, look at Basuri, 1 minute. Basuri, I feel there's a point of convenience. Sorry to intervene on your side as well. Sure. Would you agree that while it is easy for you to lecture the AAP on their being in power for over a year and not having done enough in Punjab, you are in power in Haryana and there are a significant level of farm fires in Haryana as well, right? Why haven't you changed the way things are in Haryana? Arnab, thank you for that intervention. You know, I will present the statistics for Haryana. This is an Indian Express report which talks about how 65% farm fires are in Punjab, but only 5% farm fires are in Haryana. In fact, it is Kejriwal ji's, he has gone in the media about a year ago and he said majority of the farm fires are in Punjab and very minuscule number is in North Haryana. These are his words, not mine. Now, coming back to what Haryana is doing, do you know that there was already a meeting and on the day when the first time it was the matter but was Atishi says, Atishi who you quoted says that there is no official data to know what are the different sources of air pollution in Delhi. How do you know how much is coming from Haryana and how much is coming from Punjab? This is satellite data. This is a Indian Express article that I am quoting from 7th of November 2023. This says 5% in Haryana and 65% in Punjab, right? And Indian Express has actually written this article. Akshay, respond to that. Akshay, what she's quoting, is the NASA's Information for Resource Management System firm's report 8th November, which shows, I think what she's referring to is Punjab, which is covered in red dots, signifying severe levels of farm fires in the state.
and Haryana being significantly lower. That's what she's quoting. Now you can't. Are you going to contradict the NASA information, the NASA picture? Haryana has already come up with an 11-step action plan. Let Akshay tell you what has Delhi done. Now let me respond point by point. First, let's address the data of farm fires. Arnab, there is no denying the fact that Punjab is witnessing farm fires. My singular point from the beginning of the program has been that let's not look at it in a vacuum. Let's look at what happened last year. Just compared to last year's numbers, if we are seeing a decline in the number of farm fires, I think it is a positive step in the right direction. There is no denying the fact that there continues to be a problem and we are continuing to work on it. And let me tell you what we have done in the last year itself to take. No, it's not a continue thing. The money. No. 1 minute, Akshay, allow me to intervene. Akshay, allow me to intervene for a moment, please. Please allow me. Please allow me, because I fundamentally disagree with you on the use of the word continue. See, I don't want to continue to be suffocated. I don't want to continue to go through a slow death. Nobody wants that. And Akshay, neither do you. 1 minute. Neither do you. I am saying tonight, Akshay, after this I'll hand it over to you. Akshay, see, I want as a voter delivery. And I know that Arvind Kejriwal said the Punjab government is responsible for stubble burning. It will be significantly reduced in the state by next year. Then, exactly this time last year, when the situation was getting really bad, Bhagwant Mann said, this is the last time. I promise you, I promise the people of India, I promise the people of Punjab, there will be a full solution by next year. What happened to that promise? What happened? You make so many freebie promises, free ye denge, free ye denge. आप free में हमें सांस दीजिए. आप free में free सांस दीजिए. सांस लेना मुश्किल हो गया है. हम घुट रहे हैं. Whenever you finish your question, please just give me a thumbs up. And fulfill your promise, Akshay. Whenever you're finished. No, I'm just saying, will you okay, thumbs up, fulfill your promise. Double thumbs up, fulfill your promise. Okay. Will you fulfill your promise? If I can do that on Republic right now, I only have 2 thumbs, unfortunately. Otherwise, I would have and listen to what I have to say. Okay. Miss Total Farage patience. said that the center has given X amount of money, and what has Punjab done with that? I want to tell the viewers today what Punjab has done with that money. Punjab has purchased 1.4 lakh of those crop residue machines that Ms. Farage was talking about. 24,000 of those crop residue machines have been distributed early this season, so that, and that is why you're seeing that reduction from last year. I'm nowhere saying that everything is hunky-dory. But you have to admit today, Arnab, by this time, you and I will both be dead by the time we won't, and we'll die earlier, Akshay. Okay, can I finish my point? Apart from this solution of the crop residue machines, we need a longer term, more sustainable problem to the fact by when Punjab's farmers no longer can cultivate rice, because that is where the problem is. The paddy. You said last year solution by this year. This year, what are you saying? When is the solution by? Are you willing? Are you solution by when, Akshay Marathe? Yeah, but I want to listen to you, Akshay. I only want to listen to you. But you have to tell me that last year you promised finally this year we are dying, we are suffocated, we are afraid to go out, we're afraid to take our children out, we're afraid to take our parents out, we're afraid to take a walk, we don't want to live in this situation. And I'm reminding you, tell me when. You promised me last year. Today you're saying, forget I promised you. I won't let you forget. I won't let people forget. I'll keep reminding them. Akshay Marathe, you too are in Delhi. You are breathing the same smoke. Can I tell you what happened? Someone asked me the other day, do these AAP leaders not breathe the same air? I said, they do. They said, please, when they come, remind them. Last year, they said this year. This year, what are they saying? Remind them. I'm only asking you that question. This year, कब तक करेंगे? Solution कब मिलेगा? I'm waiting for your thumbs up before you stop talking and let me speak. Whenever you're ready, Arnab, I'm No, last night it rained. 1 minute. Last night when it rained, I thought seriously, when I realized it's raining, cats and dogs at 2 o'clock, I thought I will go on the terrace of my house, breathe in some air and come back, because pata nahi kab mauka milega. Now, I can't live like that, you see. And neither can you.
Okay, now, thumbs up. Can you give me uninterrupted time? I have listened to you. Everybody has listened to you. Thank you so much. Okay. The biggest, like I was saying, the biggest problem is that Punjab still is cultivating paddy crop, which ends, the harvesting cycle ends too late, and there is not enough time for farmers to move on to the next cycle. So, which is why Bhagwant Manjhi has taken a very bold decision that we are banning long duration rice from 2024. And as soon as that decision gets implemented in 2024, we will see instantaneous results. This is not to say that this year we are not taking responsibility. We are taking responsibility. But our singular point is that it cannot be that only Punjab and Delhi and Aam Aadmi Party are responsible. Can you tell me why is Patna's air pollution so bad today? Is that also because of Punjab? Why is Mumbai's air pollution so bad today? Is that also because of Punjab? When will we see the country's national leadership step up and address the nation? Okay, no. 1 minute. To stop air pollution from how being fair a is it of you? Are we denying? Okay, I'll ask. We cannot live in denial. I'll let that question bounce I'm to originally from Basuri. Mumbai. My family I is agree. in Mumbai, and they have really but been you answer struggling. my question. Are we saying You that answer my Mumbai's question. struggles are You not ask. relevant because Aam Aadmi Party is not in power in Mumbai? 1 minute. So This transition to long duration paddy or whatever you mentioned, why could you not take this decision last year for this year? I'm sorry, every year you come up with a long lead time item, some new theory. Next year we'll bring this technology. Next year we'll bring a space shuttle. Next year we'll change the crop pattern. Next year we'll change the burning pattern. Next year will be things okay. Which next year are you talking about? What stopped you from giving this deadline last year? Did I tell you? Did Basuri tell you? No, let people die for 1 more year. Why? Then come up with a solution next year. You tell me, did the rice tell you we will not grow in 2023? Did the rice seeds tell you they will not work in 2023? What stopped you? It's very easy to make jokes on rice cultivation. It is the same rice that you and all of your Bengali friends are eating. So let's not make jokes about rice cultivation. I'm not insulting rice. I'm Assamese. Sacrifices for our. I'm sorry. I mistook you for a Bengali. But my point is the same. That no, it's all okay. The rice that India is eating, I'm also a lot of it is coming from Punjab, and. Exactly my That's point. Not the point. So I'm just saying, let's not make fun. No, 1 minute. I'm making excuses. And by the way, speaking of Bengal, you didn't mention Kolkata, which is even more polluted than Delhi, because you don't want to criticize Mamata Banerjee. Kolkata is the third most polluted city in the world, but you won't mention it. Today, but we have to admit that it is a national problem. And why won't we ask questions of Mr. Modi? When have we seen Mr. Modi come to the country and address a press conference saying these are the steps that my government is going to take, and you hold me accountable? He said 5 years ago that farmers' income will double by 2022. It did not happen, but you have not asked any questions to them. If farmers' income did double by 2022, then we may not even see this problem. Right? Yeah. So let's be very clear that this is a national problem. It needs a national strategy. Okay, allow me to first let me answer why the questions are not being asked to the center. The reason for that is because आपके शब्द हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बहुत ही लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, भगवत मान जी बहुत लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, और पंजाब और दिल्ली दोनों की जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार को चुना है. आपकी जवाबदेही बनती है जनता को. The center can allocate. और मुंबई के लिए क्या मुंबई के लिए भी आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है? But you have to answer the national question. You cannot keep pointing fingers, Ms. Swaraj. What about Mumbai? What about Kolkata? What about Patna? What about Madhya Pradesh? Is Aam Aadmi Party in power in all of these states? Come on, what are we talking about? Please stop shirking your responsibility. I am also a citizen of Delhi. Please stop shirking your responsibility. This is not about politicizing. Is Aam Aadmi Party in power in Mumbai? You Aam Aadmi Party in power in Madhya Pradesh? Is Aam Aadmi Party in power in Chhattisgarh? Is Aam Aadmi Party in power in West Bengal? How is Arvind Kejriwal responsible for national air pollution in our country? Has actually blessed us with some rain showers. Please. Now, please listen to me. Answer this question. You will say Modi ji brought rain showers tomorrow. You answer the question, why is Kolkata under pollution? Why is Mumbai under pollution? Why is Chhattisgarh, Madhya Pradesh under pollution? Is Arvind Kejriwal responsible for that? Akshay ji, you want to turn this into Are you seriously saying Arvind Kejriwal is responsible for pollution in Mumbai?
So, Arnab, what happens 1 minute. is... Let her respond to you, Akshay. When you don't have facts supporting you, this is what you do. You try to muzzle the opposition of the state. You actually try to drown out the voices by turning the debate into a cacophony. Please just answer a couple of questions. Please tell me, 68 lakh rupees were actually spent by the Aam Aadmi Party government on procurement of a biodecomposer for stubble. The shocking fact is 23 crore rupees was spent just on advertisement of that particular product, which was worth only 68 lakh rupees. Why were the funds spent on advertisement and not on procuring that biodecomposer further? That 23 crore rupees were just wasted on nothing but prachar and prasar. Please tell me, why is this smog tower lying defunct for the last 8 months? 23 or 20 odd crores rupees was spent on that. It took the Supreme Court to actually say, please. Okay, I'm running short. 48 hours. She's got the point. Akshay. I'm still shocked that the BJP spokesperson who's representing Mr. Narendra Modi refuses to take responsibility for Mumbai's air pollution, Kolkata's air pollution, and points fingers at Arvind Kejriwal. But I'm equally shocked, Akshay, that the Aam Aadmi Party, which is in power in Delhi, will ask questions about Mumbai but deflect the issue in NCR. When you are in power in Mumbai, I'll ask you about Mumbai. You are more interested in Mumbai than the states in which you are in power, and that is a fundamental problem. I feel at the end of the day, viewers, here's my 2 bits on this. Essentially, these political parties want to continue to blame each other. You can sit together and solve it. It's not difficult. But let us start with Kejriwal and Bhagwant Mann sitting down and solving it. The issue is between Delhi and Punjab, 80% of the issue. Then we'll deal with the rest. Anyway, I wish you all a fantastic Diwali. Ladies and gentlemen, have a wonderful celebratory weekend. See you soon. Good night and goodbye. Presented by Berger Easy Clean. Powered by Reva University, a social impact multidisciplinary university. Secrite, रखे देश का हर business cyber सुरक्षित. Secure your tomorrow today. Amazing spaces के लिए Green Lamb Laminates. कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा. PolicyBazaar.com. हर family होगी insured. Cucina, the kitchen experts. Cucina. Co-powered by Mankind Pharma, brings premium DMF quality medicine for India. Tata EV, move with meaning. Hello, Moto. Motorola, India's best 5G smartphone brand. QS and THE, the world's foremost university rankings organizations, have ranked Amity amongst the top 3% universities globally, making it among the very few Indian universities to be included in both rankings. Yet another top ranking for Amity University. Dinosaur Kanda. Oh, damn! World War I की antique gun. Oh, damn! फिर दीवार तोड़ो, फिर बनाओ. बर्जर डैम स्टॉप लगा. इसका नैनो सिलिकॉन टेक्नोलॉजी चढ़ा वाटर प्रूफिंग का कवर जो बिना दीवार तोड़े डैम रिपेयर करे. बर्जर डैम स्टॉप. No झंझट, डैम स्टॉप फटाफट. मेरी नजरों से चुना, तेरी हरकतों से सुना. कभी जीती तू, कभी मैं हारा. फिर भी खूबसूरत है ये नजारा, क्योंकि इसमें है खुला कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा. अमेजिंग स्पेसेस के लिए ग्रीन लैम्ब लैमिनेट्स. कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा. It's festival time and it's time to dress up. It's time to gear up for the celebrations. It's time to celebrate with Manyavar. Presented by Berger Easy Clean. Powered by Reva University, a social impact multidisciplinary university.
Secrite, रखे देश का हर बिजनेस साइबर सुरक्षित. Secure your tomorrow today. Amazing spaces के लिए Green Lamb Laminates. कुछ मेरा, कुछ तुम्हारा. PolicyBazaar.com. हर फैमिली होगी इंश्योर्ड. Cucina, the kitchen experts. Cucina. Co-powered by Mankind Pharma, brings premium DMF quality medicine for India. Tata EV, move with meaning. देखिए, डॉक्टर्स आपकी प्रॉब्लम्स को समझकर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं. इसलिए बीपी, डायबिटीज, जो भी लाइफस्टाइल डिजीजेस हो, उन्हें नजरअंदाज मत कीजिए. सही दवा लीजिए, सही टाइम पर लीजिए, और डॉक्टर की सलाह से ही उन्हें छोड़िए, खुद से नहीं. मैनकाइंड फार्मा, सर्विंग लाइफ. ये किचन नया तो कुक भी नया. 1 मिनट. हाँ, या नमक कम है तो डाल दो. यार, ये नमक नकली है क्या? नमक नहीं, कुक नकली है. अब किचन इतना इनवाइटिंग होगा तो कुछ नया बनाना एक्साइटिंग होगा. कुक अप द न्यू कुचीना, द किचन एक्सपर्ट्स. बर्जर डैम स्टॉप लगा. इसका नैनो सिलिकॉन टेक्नोलॉजी चढ़ा वाटर प्रूफिंग का कवर, जो बिना दीवार तोड़े डैम रिपेयर करे. बर्जर डैम स्टॉप. नो झंझट, डैम स्टॉप फटाफट. From the Delhi studios of Republic TV, it's time for Arnab Goswami on The Debate.